गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कन्विक्टेड लेजिस्लेटर्स। तो ये आपके टॉपिक पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दो उत्तर प्रदेश के लेजिस्लेटर्स हैं जिनको क्रिमिनल चार्जेस के लिए कन्विक्ट किया गया है रिसेंटली, लेकिन उसमें से एक को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और उनकी सीट को जो है वेकेंट डिक्लेयर करके अब उस पर इलेक्शन या बाई इलेक्शन कराने का जो है वो फैसला लिया जाएगा। तो हम इस टॉपिक के बारे में देखते हैं। आपको पता है कि सेक्शन 8 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का कहता है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को हमको डीक्रिमिनलाइज करना है। तो दो तरह के क्रिमिनल केसेस होते हैं। जैसे पहले जो कैटेगरी है उसमें डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो 6 साल के लिए हो सकती है, और इस 6 साल का पीरियड तब शुरुआत होगी जब से कन्विक्शन की डेट मानी गई है। ठीक है, समझ लो आपको आज कन्विक्ट किया गया है तो उस टाइम से लेके आपको 6 साल तक आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आप इलेक्शंस नहीं लड़ सकते। ठीक है, तो ऐसे कौन से ऑफेंसेस हैं जिनके लिए 6 साल की जो है बैन लग जाता है? जैसे आपने कोई ऐसी स्पीच दी हो जिससे कि आपने हेट स्पीच हो, जिसको आपने एनिमिटी प्रमोट करने के लिए स्पीच दी हो ग्रुप्स के बीच में, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, कस्टम्स एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, या फिर ऐसे सोशल जो है आपके क्राइम किए हों जैसे सती, करप्शन या टेररिज्म, या इवन नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम कभी आपने इंसल्ट किया हो तो उस केसेस में आपको 6 साल का बैन लग सकता है। बाकी के जितने भी प्रोविजंस हैं उनको एक सेपरेट कैटेगरी में रखा गया है, जो ये सेकेंड कैटेगरी जिसको हम कह रहे हैं। उसमें आपको जो है उसमें डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि आपको 2 साल की 2 साल तक की जो है जेल अगर होती है तो उसमें जो है उसमें डिस्क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा की होती है तो ऑफ कोर्स आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक अब देखते हैं कि लीगल प्रोटेक्शन। अब लीगल प्रोटेक्शन कैसे मिलती है? तो आपको याद होगा कि 2013 में जब लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, उससे पहले क्या प्रोविजन होता था कि अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट इमीडिएट डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता था, खासकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को, और डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो 3 महीने तक नहीं की जाती थी। लेकिन लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस क्लॉज को हटाया और कहा कि नहीं, जैसे ही कन्विक्शन होगी उसी टाइम से डिस्क्वालिफिकेशन जो है करनी पड़ेगी। क्या इस डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव भी किया जा सकता है? ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो इस सेंटेंस को या इस कन्विक्शन को रिमूव कर सकता है। तो कन्विक्शन को पर स्टे भी कर सकता है और अलाउ भी कर सकता है कि जो पर्सन जो है उसको इलेक्शन लड़ने का जो है वो अलाउ भी किया जा सकता है। तो अंडर सेक्शन 11 जो है इसका आरपीआई का, उसमें इलेक्शन कमीशन को रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ते हैं कि क्यों किसी पर्सन की डिस्क्वालिफिकेशन को जो है रिड्यूस करना चाहिए। ऐसा ऑफ कोर्स सिक्किम के चीफ मिनिस्टर के केस में भी किया गया था, जब वो 1 साल के लिए करप्शन के केस में गए थे तो उनकी जो है डिस्क्वालिफिकेशन को कम कर दिया गया था ताकि वो बाई इलेक्शन लड़ सकें और वो ऑफिस में रह सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स। इन्वायरमेंट के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 3 नवंबर को हम इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स मनाते हैं। पहली बार ये डे मनाया गया है 2022 में, तो इसलिए आपके प्रीलिम्स के लिए ये 2023 के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ये एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है बाय यूनेस्को, और इसमें कि कोई भी नेचुरल या कल्चरल लैंडस्केप जो है उसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया जा सकता है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल एरिया पे हो या फिर कोस्टल या मरीन इकोसिस्टम का पार्ट हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन भी हो। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को खुद तो डिक्लेयर नहीं करता है, लेकिन नेशनल गवर्नमेंट्स नॉमिनेट करती हैं और उसके बाद यूनेस्को उस पर फैसला लेता है कि उसको हम बायोस्फीयर रिजर्व मानेंगे या नहीं मानेंगे। ऑफकोर्स इवन चाहे वो बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर भी हो जाए फिर भी वो सोवरेन जुरिस्डिक्शन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट के अंडर ही रहता है, ऐसा नहीं कि यूनेस्को के अंडर आ जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या है इसके बारे में भी देखते हैं। तो आपका मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो कि 1971 में शुरू किया गया था, उसी के अंदर ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स का जो है शुरू किया गया, जिसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन और हार्मनी के साथ, नेचर के साथ रहना, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, नॉर्थ साउथ या साउथ साउथ कंट्रीज़ का कोलैबोरेशन के लिए यूनेस्को ने इस प्रोग्राम को शुरू किया। लगभग 738 ऐसी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं 134 कंट्रीज़ में जिनको यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया है, और उसमें से 12 जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो इंडिया में है। तो अगर हम देखें कि साउथ एशिया के कंटेक्स्ट में, तो सबसे पहला साउथ एशिया का बायोस्फीयर रिजर्व हुरुलू बायोस्फीयर रिजर्व था जो कि श्रीलंका में है। और अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो नीलगिरीज जो है वो इंडिया में सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किए गए थे यूनेस्को द्वारा 2000
ईयर में, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, सोशल इशूज़ के लिए, गवर्नेंस, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्ट्री ने नेशनल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है उनको रिलीज़ किया है स्कूल एजुकेशन के लिए। तो ऑफकोर्स हर साल रिलीज़ किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा, देखा जाता है कि स्टेट्स कैसे परफॉर्म कर रही हैं स्कूल एजुकेशन में, ठीक है। तो ऑफकोर्स एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग को जो है प्रेजेंट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए इसको निकाला जाता है, ताकि बेसिकली स्टेट्स को आपस में देख सकें कि कौन सी स्टेट जो है वो स्कूल एजुकेशन में अच्छे से परफॉर्म कर रही है। तो सबसे पहले 2019 में इसको निकाला गया था, 2017 और 18 का आंकड़ा लेकर। कैसे, क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पर ये जो है इंडेक्स निकाला जाता है? तो लगभग 1000 पॉइंट स्कोर करने होते हैं 70 पैरामीटर्स पे, जो कि ब्रॉडली 5 कैटेगरी में होते हैं, एक्सेस, गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विटी और लर्निंग आउटकम्स में। तो लेवल 1 क्या होता है, जिसमें आपके बहुत ही अच्छा स्कोर है, मतलब 951 से लेकर 1000 पॉइंट्स तक का स्कोर जिस स्टेट ने किया हो उसको हम लेवल 1 कैटेगरी की स्टेट मानते हैं। लेवल 2 कैटेगरी की वो स्टेट होती है जिसका 901 से लेकर 950 तक स्कोर आया हो। लोएस्ट वो होता है जो कि 0 से लेकर 550 पॉइंट्स के बीच में आया हो, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अल्टीमेट एम यही है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का, कि स्टेट्स और यूटीज जो है वो आपस में सीख सकें, मल्टी प्रॉन्ग्ड इंटरवेंशंस कर सकें और स्कूल एजुकेशन को इंप्रूव कर सकें। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी ने जो है इसको निकाला है, और अभी तक इस साल का अगर हम देखें 2020 और 21 का आंकड़ा यूज़ किया गया है 2022 के जो है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में, तो कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो है वो हाईएस्ट जो गोल है आपका लेवल 1 वो उसमें नहीं आ पाई है। पंजाब जो है वो केरला और महाराष्ट्र के साथ लेवल 2 में आया है, और लेवल 2 में इस साल और 4 स्टेट्स ऐड हुई हैं, गुजरात, चंडीगढ़, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। लद्दाख ने भी बहुत जो है अच्छी इंप्रूवमेंट्स दिखाई हैं, और लेवल 8 से वो अब लेवल 4 में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूडीसे। यूडीसे क्या है, आपके सोशल इश्यूज और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस डेटा, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज़ किया है। इसके अंदर बताया गया है कि इस साल हम अपने बच्चों को स्कूल में रिटेन करने में सक्सेसफुल रहे हैं, और टोटल एनरोलमेंट जो है वो लगभग 19 लाख से इंक्रीज़ हुई है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और इसमें अच्छी बात यह है कि 8 लाख जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं वो इसमें इंक्रीज़ हुई हैं, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी जो है वो निकालता है इस यूडीसे को, और डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के डेटा को जो इंटीग्रेट किया जाता है एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन के लेवल पर। लगभग 1.5 मिलियन स्कूल चिल्ड्रन, 9.6 मिलियन टीचर्स और 264 मिलियन 1.5 मिलियन स्कूल्स, 9.6 मिलियन टीचर्स और लगभग 264 मिलियन चिल्ड्रन जो है इसमें डेटा में कवर किए जाते हैं। तो बेसिकली ये एक आपका इम्प्रूव्ड वर्जन है यूडीसे का, जो 2018-19 में निकाला गया था। अब इसमें ऑनलाइन डेटा कलेक्शन होती है स्कूल से, और देखा जाता है कि स्कूल जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसे इस साल के जो डेटा है वो ये कह रहा है कि लगभग 14.9 लाख स्कूल्स हैं कंट्री में 2021 और 22 के पीरियड में, उसमें से 15 लाख जो है वो 2020 और 21 में थे। तो मतलब लगभग 10,000 के आसपास जो स्कूल हैं वो कम हुए हैं, बिकॉज ऑफ एनी, या फिर ग्रुपिंग हो गई है, क्लस्टरिंग हो गई है स्कूल्स की, तो उसकी वजह से आपको आंकड़ा थोड़ा कम दिख रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्कूल बंद हो गए हैं मर्जर हो जाते हैं, जो है बंद जो है जो क्लस्टरिंग कर दी जाती है, तो उसकी वजह से जो है आपको ये थोड़ा आंकड़ा इस बार कम दिख रहा है। तो शेयर ऑफ प्राइवेट स्कूल जो है वो लगभग 24% है, और गवर्नमेंट स्कूल जो है वो 48% है। तो ट्रेंड ऑफ चिल्ड्रन प्राइवेट से जो पब्लिक स्कूल्स में जा रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है। एनरोलमेंट इन गवर्नमेंट स्कूल जो है वो इंक्रीज़ हुई है लगभग 83.35 लाख से। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइवेट एजुकेशन या तो बहुत महंगी है, या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स की जो परफॉर्मेंस है, या गवर्नमेंट स्कूल्स की जो एक तरह से एजुकेशन है वो इम्प्रूव हुई है। इसकी वजह से ही जो है वो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल की तरफ मूव होने को तैयार हो गए हैं, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है दोनों में से, बट वो डेटा से देखना पड़ेगा। तो प्यूपिल टीचर रेशियो को भी देख लेते हैं, वो भी इम्प्रूव हुई है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो थोड़ी सी कम हुई है इस बार एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। जेंडर पैरिटी इंडेक्स हम देखें तो जो है वो भी इम्प्रूव हुआ है, लगभग 8.2 लाख जो है वो गर्ल्स ने एनरोल किया। हमने पहले भी देखा था लगभग 8 लाख जो है लड़कियों ने एक्स्ट्रा जो है वो इस बार उसमें राइज देखने को मिला है एनरोलमेंट में। और ओवरऑल स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी इम्प्रूव हुआ है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स। तो ये आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो होम मिनिस्ट्री जो है उन्होंने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को लिखा है कि आप अपने
हर पुलिस स्टेशन में चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट करो जो कि चिल्ड्रन से एक्सक्लूसिवली डील करेगा, ठीक है। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि कम से कम एक ऑफिसर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI लेवल पर होना चाहिए और वो हर पुलिस स्टेशन में बच्चों को असिस्ट करने के लिए होना चाहिए। तो NCPCR भी कहता है कि एक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट होना चाहिए एक डिस्ट्रिक्ट और सिटी के अंदर या सिटी के अंदर, जो कि एक ऑफिसर DSP लेवल के ऑफिसर द्वारा जो है वो हेडेड होना चाहिए, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि आपके जो है बच्चों को अगर या फिर कोई जुवेनाइल है उसको पुलिस का जो है फंक्शनिंग में या पुलिस से कैसे डील करना है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से डील कर पाएगा। और इसके जो कॉन्टैक्ट हैं जो CWPOs के जो कॉन्टैक्ट हैं वो सब पुलिस स्टेशन में प्रोमिनेंटली डिस्प्ले होने चाहिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कॉर्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो असम की बोडोलैंड यूनिवर्सिटी ने एक कोलैबोरेटिव रिसर्च की है जर्मनी के साथ और उन्होंने फंगस पावर्ड बायोसिंथेसाइज्ड नैनो गोल्ड पार्टिकल्स बनाए हैं जो कि आपके कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज, ये आपका गोल्ड सॉल्ट होते हैं और गोल्ड सॉल्ट के साथ मिलकर जो है ये नैनो पार्टिकल्स जो है आपकी ड्रग डिलीवरी, जो आपकी बॉडी में ड्रग जाएगा, आपको समझ लो कि कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह पर कोई बीमारी है जहाँ पर ड्रग का जाना मुश्किल हो जाता है, तो इनका यूज़ करते हुए उस स्पेसिफिक लोकेशन पर ड्रग को पहुँचाया जा सकता है बहुत ही फास्ट तरीके से और बहुत ही अच्छे और एफिशिएंट तरीके से, ठीक है। तो ये कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज जो है ये एक पैरासिटिक फंगस है जिसको गोल्ड सॉल्ट के साथ मिक्स किया गया है और उसके बेसिस से ये जो उसके ही तरीके से इसको बनाया गया है और ये ऑफ कोर्स मेडिसिन जो है ठीक लोकेशन पर पहुंचाने के लिए काम करेंगे बॉडी में, ठीक है। तो कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज ऑफ कोर्स एक आपका जो है पैरासिटिक फंगस है जिसको हम सुपर मशरूम भी कहते हैं और इसमें बायो एक्टिव कॉम्पोनेंट्स डाले जाते हैं ताकि जैसे इन द फॉर्म ऑफ जैसे गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, ताकि बेटर पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग जो है बॉडी में हो सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मोना लोआ, आपके ज्योग्राफी के लिए या इन्वायरमेंट के लिए भी आप कह सकते हो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अभी रिसेंटली मोना लोआ जो आपका हवाई में पड़ता है, यूएस की टेरिटरी है, यूएस का आइलैंड है हवाई, वहाँ पर ग्राउंड शेकिंग और स्वेलिंग स्टार्ट हो गई है जिससे लग रहा है कि शायद ये वॉल्केनो इरप्ट हो सकता है। तो वन ऑफ द 5 वॉल्केनोज हैं जो बिग आइलैंड ऑफ हवाई को बनाते हैं। सबसे लंबा तो नहीं है लेकिन सबसे लार्जेस्ट है और लगभग हाफ ऑफ द आइलैंड का लैंड मास जो है वो ये मोना लोआ ही कंस्टिट्यूट करता है। लगभग 38 साल पहले जो है ये इरप्ट हुआ था और 1843 से इसकी हिस्ट्री को जो है वो डेट किया जा रहा है और उस टाइम से लेकर आज तक ये लगभग 33 टाइम जो है वो इरप्ट हुआ है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेना स्पेक्टाबलिस। तो ये एक एक्जॉटिक ट्री, ये भी एनवायरनमेंट के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। तो एक एक्जॉटिक ट्री है जो कि जिसने लगभग 800 से लेकर 1200 हेक्टेयर तक का जो बफर जोन है मुडुमलाई टाइगर रिजर्व का नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में उसको कवर कर लिया है, क्योंकि ये एक इन्वेजिव स्पीशीज़ है। इसको एक ऑर्नामेंटल स्पीशीज़ की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको साउथ और सेंट्रल अमेरिका में फायरवुड की तरह यूज़ करते हैं। बहुत ही इन्वेजिव है, एक बार ये फैलना शुरू हो तो पूरे जंगल को कवर कर लेता है और ये यूकेलिप्टस पाइन जो है ऐसे एरियाज़ को जो है यूकेलिप्टस और पाइन के कंपैरिजन में जो कि बहुत ही इतनी तेज़ी से नहीं जो है वो स्प्रेड होते हैं, बट ये जो है सेना स्पेक्टेबिलिस ये एक ऐसा ट्री है जो बहुत ही तेज़ी से फैलता है और ये एक मेजर इन्वेजिव स्पीशीज़ है, ठीक है। तो हम मुडुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में भी देखते हैं। नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु के पड़ता है, कर्नाटका केरला और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पर पड़ता है। इसके आसपास आपको देखने को मिलेगी वयनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बंडीपुर टाइगर रिजर्व, नीलगिरीज नॉर्थ डिवीजन एंड गुडालूर फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ साउथ वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पनामरम हेरोनरी। सो ये भी आपके एनवायरनमेंट के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो केरला स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड और पनामरम ग्राम पंचायत के इंटरवेंशन की वजह से पनामरम हेरोनरी जो है उनको एक फ्रेश लीज ऑफ लाइफ मिलने वाली है। तो पहली बात तो हमको पता होना चाहिए कि पनामरम हेरोनरी जो है वो हेरॉन्स क्या आते हैं, हेरॉन्स होते हैं ऐसे लार्ज बर्ड जो कि फिश को ईट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके मालाबार रीजन में जो ये बर्ड्स होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए पनामरम हेरोनरी जो है वो लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड है इन हेरॉन्स का और ये पनामरम रिवर के पास पड़ता है और इसमें एक बहुत ही जो ग्लोबली थ्रेटन्ड वाटर फाउल्स हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। ये ऐसी अकेली लोकेशन है केरला में जहाँ पर कैटल एग्रेट भी जो है वो ब्रीड करता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is disqualification of convicted legislators. So this topic is important for your polity section. So recently 2 Uttar Pradesh legislators were convicted of criminal charges, but of course one of them has been disqualified and his seat has been declared vacant. Probably the by-election would be announced very soon on this person's assembly seat. So what are the provisions which are related to disqualification of any legislator in terms of conviction? So you know that
that Section 8 of Representation of People's Act contains provisions which are aimed to decriminalize electoral politics. So there are two kind of criminal cases. In the first category of offences, a period of 6 years is earmarked for disqualification, and the person cannot fight elections for 6 years if he or she is indulged into certain category of offences or criminal offences. So which are these category of offences? Making speech which may cause enmity between groups, or being involved in Protection of Civil Rights Act, Customs Act, Unlawful Activities Prevention Act, laws related to sati, corruption, terrorism, insult to national flag and national anthem, etc. So if you are involved, if any legislator, a member of parliament, if they are involved in any of these cases and they are convicted of it, then they are disqualified to run for elections for a period of 6 years. And then the second category is for all other criminal offences. If their sentence of conviction is less than 2 years, then they will not be disqualified. But if their sentence is more than 2 years, then they will of course be disqualified for a 6 year period, as mentioned in the first category of cases. Okay, so of course you know that Lily Thomas versus Union of India case is very important, which was a case of 2013. Before this case, under Section 8 subsection 4 of Representation of People's Act, of course the legislators could not be immediately disqualified. They could be disqualified only after 3 months, and because they were given a chance to appeal in the higher court of law. But in Lily Thomas versus Union of India case, the Supreme Court struck down this clause, and this ended the protection which was enjoyed by the lawmakers. So can the disqualification be removed still even then? Of course, Supreme Court has the power not only just stay the sentence, but also the conviction of that person. If the conviction is stayed, of course the person would be able to contest an election. Okay, even under Section 11 of the RPA, the Election Commission may record reasons and reduce this period. Of course, the Supreme Court would be taking the decision, and this was done by the Election Commission to allow Sikkim's Chief Minister P.S. Tawang, who was serving a 1-year sentence for corruption, and his disqualification was reduced so that he can contest a by-election and remain in office. So the next topic is International Day for Biosphere Reserves. This topic is very important because this is the first time that we are celebrating this International Day for Biosphere Reserves since 2022 only. So this topic is important for environment section. So November 3 will from this year, November 3 will be marked as the International Day for Biosphere Reserves. So what are the biosphere reserves? Of course, these are the international designation given by UNESCO to any natural or cultural landscape which is extends over the area of any terrestrial or coastal marine ecosystem, or even a combination thereof. And the biospheres are not nominated by UNESCO themselves, but by the national government, and based upon the data given by the national governments, the UNESCO takes a decision. And even after the biosphere reserve is declared as one by the UNESCO, they remain under the sovereign jurisdiction of the concerned states. So what is World Network of Biosphere Reserves? So of course it is the Man and the Biosphere Reserves program, which was formed in 1971. The aim of this program was to have a biodiversity conservation, ecosystem restoration, and even living in harmony with nature. So basically the aim was to promote North-South and South-South collaboration. Currently almost 738 properties have been declared as biosphere reserves, out of which 12 are in India. So if we look at the South Asia's picture, the first biosphere reserve was declared in Sri Lanka, the Hurulu Biosphere Reserve, and it's a tropical dry evergreen forest. And in India, the first biosphere reserve was Nilgiris, which was declared by UNESCO in the year 2000. So the next topic is Performance Grading Index. This topic is important for your social issues and governance also. So recently, Union Education Ministry has released the National Performance Grading Index of school education for the year 2020 and 21. So it's an annual publication which has been released by the Ministry of Education, and it assesses the performance of states in school education. So it also promotes evidence-based policy making so that states can learn from each other, so that we can see how the states are performing in the field of school education. So there are almost 1000 points, and they are divided across 70 parameters, which are clubbed in almost 5 broad categories: access to education, governance, infrastructure, equity, learning outcomes. These are the broad categories under which these 70 parameters are enshrined.
Okay, so based upon the score of the states, 1,000 points have to be scored out of a total of 1,000 points are there, and based upon the scores, the levels are decided. So level one means that you have scored between 951 to 1,000 points. Level two means that you have scored between 901 to 950 points. The lowest is of course the level 10, which means the score between 0 to 550 points. So of course the ultimate aim of performance grading index is to propel states and UTs so that they can undertake multi-pronged interventions so that optimal education can be achieved in in the field of school education. So Department of School Education and Literacy has released the performance grading index for this for the 2020 and 2021 period. No state or union territory has managed to attain the highest achievable grade of level 1, of course, in which a score of more than 950 is required. Punjab has shared top honors with Kerala and Maharashtra, and they have scored almost 928 out of 1,000 points. Of course, four new states have been added to this level 2 list: Gujarat, Chandigarh, Rajasthan, and Andhra Pradesh. And even the Ladakh has improved its score from the level 8 to now level 4, and probably it would increase its scores further in the next year. So the next topic is UDC plus. This is a topic for your social issues and governance. So recently, Ministry of Education has also released the Unified District Information System for Education Plus data, which has said that almost 19 lakh enrollment has been increased in school education, and the good news is that almost 8 lakh girl students constitute a part of this 19 lakh figure. So Department of School Education and Literacy has released this data, and it covers almost 1.5 million schools, 9.6 million teachers, and more than 264 million children. So basically the data is given regarding the school's performance and how the schools are performing, how the education level is being basically how the education is being measured through this UDC data. So well functioning and sustainable education management information system is the ultimate target of UDC data. So the this year, of course, for the time period of 2020 and 21, almost 14.9 lakh schools are there in the country, which is almost 10,000 less from last year. But of course, the schools have not closed, but they are either merged or they are clustered into one. So that's why the figures have been the figures have turned less this year. So the trend of school children switching from private to public schools has also deepened, and enrollment in government schools has increased by almost 83.35 lakh. And Uttar Pradesh is the state where the highest number of enrollment of students in government schools is happening, which either means and also recruitment of teachers is also happening in the government schools because of high intake of students. It either means that the private education has become unaffordable, or the standards of government schools have improved remarkably in the state. That's why even the people who can afford the private education, they are moving towards government school. Okay, so the pupil teacher ratio has also improved. The gross enrollment ratio has decreased marginally at the secondary level, but while across the other levels it remains better. The gender parity index, which means the enrollment and representation of females in school education, has also improved. We saw that almost 8.2 lakh girls have enrolled more in 2020 and 2021. Even the overall school infrastructure has improved this year. So the next topic is child welfare police officers. This topic is important for your social issues. So Ministry of Home Affairs has recently asked states and union territories to appoint a child welfare police officer in every police station so that they can deal exclusively with the children. As per the Juvenile Justice Act provisions, one officer not below the rank of ASI has to be there in every police station so that they can assist children. A National Commission for Protection of Child Rights has also requested that a special juvenile police unit must be established in each district and city so as to assist children. This officer must not be below the rank of DSP, and the contact particulars of CWPOs must also be displayed at all prominent locations of all police stations. So the next topic is Cordy gold nanoparticles. This topic is important for your science and tech section. So Assam's Bodoland University has recently indulged into a collaborative effort or collaborative research with the
researchers from Germany, and they have powered a fungus powered biosynthesizer with the nanogold particles. They have been able to synthesize the extract of Cordyceps militaris, which what it is, it's a parasitic fungus, and they have combined it, or they have synthesized it with gold salts, so that these nanoparticles would be able to make drug delivery in the human body faster and surer. Okay, so of course, what is Cordyceps militaris? It's of course a parasitic fungus, which is also called super mushroom, and the bioactive compounds like gold salts have been added to it, so that the drugs can be better penetrated into the human body. So the next topic is Mauna Loa. This topic is important for both geography and your environment section. So recently, the incidents of ground shaking and swelling have been witnessed at Mauna Loa, which is the largest active volcano in Hawaii. And of course, it is not the tallest in Hawaii, but it is the largest, and it makes up about half of the island's land mass. It is one of the 5 volcanoes which make up the big island of Hawaii, which is of course under the U.S. administration, and it has erupted last time 38 years ago. If we look at its history, which we started dating since 1843, it has erupted over 33 times. So the next topic is Senna spectabilis. So this topic is important for our environment section. So Senna spectabilis is an exotic tree, and it has taken over almost 800 hectares to 1200 hectares of the buffer zones of Mudumalai Tiger Reserve in Nilgiri's Hill District. It's an invasive species basically, and it was actually introduced as an ornamental species, and it was used as a firewood in South and Central America. It is very invasive, and it has covered the area of almost 800 to 1200 hectares of Mudumalai Tiger Reserve, which is of course in the Nilgiris district of Tamil Nadu. It stands at the tri-junction of 3 states, Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu, and it has a common boundary with Vayana Wildlife Sanctuary, Bandipur Tiger Reserve, Nilgiris North Division, and also Gudalur Forest Division. So the next topic is Panamaram heronry. This topic is also important for your environment section. So you know that recently Kerala State Biodiversity Board and the Panamaram Gram Panchayat has made certain interventions, and this will basically give a fresh lease of life to Panamaram heronry. So Panamaram heronry is the largest breeding ground of different species of herons. Herons are basically the large fish-eating birds in the Malabar region, and this tiny islet is a haven for globally threatened waterfowls, and it is the only location in the state where even the cattle egret breeds. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.